Assalamu alaikum students. Today we are starting our chapter number 4, that is the struggle for freedom. Before starting a chapter, you have to understand the meaning of these keywords. Viceroy means someone who represents a king or queen and rules for him or her in another country. Number 2, legislature. Legislature means those who write the laws. Number 3, legislative council. Legislative council means a permanent committee chosen from both houses that meets between sessions of a state legislature to study state problems and plan a legislative program. Nominate. Nominate means to formally choose someone as a candidate for a job, position, office, etc. Elect means choose someone to hold public office or some other position by voting. Act means premature statute of written law, an act of a legislature that declares, prescribes, or commands something, a specific law expressed in writing. Famine means extreme shortage of food. Now let's begin the topic. War of Independence 1857 to 1859. Indians of subcontinent, Hindu and Muslim versus British rule. British won and Muslim lost their hope. Number of Muslims executed and dismissed from British army. Muslim refused to participate, trade and education. In result, only few educated Muslims were there who could help to take part in politics to run government. स्टूडेंट 1857 1859 ये पीरियड हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का है, यानी इस टाइम पीरियड में सब कॉन्टिनेंट में इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी. This war was fought between Indians and Britishers. Students, you know that before independence, Muslims and Hindus were living all together in subcontinent of India. They both fought against British. So during this time period, a number of Muslims executed and dismissed from British army. और उनको ट्रेड और एजुकेशन में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया गया था. In result, only few educated Muslims were there who could help to take part in politics to run government. Means जो selected educated Muslims थे उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था ताकि वो गवर्नमेंट चला सकें. War of Independence is an important landmark in the history of subcontinent, and this war was fought by Indians against the British in order to get rid of British domination. The Government of India Act 1858. After the War of Independence, British government learned that Indians do not want their dominance and Western culture. स्टूडेंट्स, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो गया था कि इंडियंस को उनकी डोमिनेंस और वेस्टर्न कल्चर सब कॉन्टिनेंट में नहीं चाहिए. And what is the reason of this act? The reason is that India was too large to be governed by the East India Company, and British government would govern with the help of Viceroy living in India, to be assisted by a legislative council of selected British members. ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो गया था कि इंडिया बहुत बड़ा है और ब्रिटिशर्स जो है उसको अकेले गवर्न नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कुछ इंडियन
वाइसरॉयस को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिलेक्ट किया and that is why some steps were taken to educate the people. Three universities were set up in Bombay, Madras, and Calcutta. However, the Muslims did not welcome these steps. They were against the British because of the dismissal of the Mughal rule. इंडियंस को एजुकेट करने के लिए तीन यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। लेकिन मुस्लिम्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही रहे, क्योंकि उन्होंने मुग़ल रूल को वहाँ से ख़त्म कर दिया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। This act is regarded as the first step towards independence because it allowed some Indians to be in the Viceroy Legislative Council and the provincial councils. The Indian members were not elected but nominated by the British authorities. Sir Syed Ahmed Khan was nominated as member of Legislative Council. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये फर्स्ट स्टेप लिया गया था जिसमें इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यही स्टेप इनकी इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप था। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था, इलेक्ट नहीं किया था। इलेक्ट मतलब होता है कि ऑफिशियली जब इलेक्शन होते हैं उससे जो मेंबर्स इलेक्ट होकर काउंसिल में आते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को नॉमिनेट किया था, यानी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जिनमें से ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर सैयद अहमद खान को भी नॉमिनेट किया था। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सर सैयद अहमद खान नाउ appeared on the scene. He promoted education in science and technology, and for this purpose he started the Anglo-Oriental School in Aligarh, which later became a university. He tried to establish friendly relations between the Muslims and the British. तो सैयद अहमद ख़ान ने ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन करने की कोशिश की। His views were beginning of the two-nation theory because he thought that a huge country like India could not be controlled by any single government. सर सैयद अहमद ख़ान का टू नेशन थ्योरी के बारे में जो व्यू था वो जब से शुरू हो गया था जब उन्होंने देखा कि इंडिया को एक सिंगल गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर सकती। सो ही प्लांटेड द आइडिया दैट हिंदूज एंड द मुस्लिम्स शुड बी गिवन पॉलिटिकल पावर सेपरेटली। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि हिंदूज और मुस्लिम्स को पॉलिटिकल पावर्स अलग अलग दे देनी चाहिए। Progress in Subcontinent 1860 to 1890. The years 1860 to 1890 were a time of great construction in the subcontinent by the British authorities. They construct roads, railways and canals to fight famines. Famines means shortage of food in different parts of the country. 1860 से 1890 का जो हमारा पीरियड है इसमें सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी आए थे, जिसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया था कि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हायर हो सकते हैं। इवन इंडियन जजेस वर अलाउड टू ट्राई यूरोपियंस, बट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द वाइट पीपल, सो द आइडिया वाज गिवन अप। इंडियन जजेस ने यूरोपियंस को भी कोर्ट में
आने के लिए अलाउ कर दिया था, लेकिन वाइट पीपल के प्रोटेस्ट के बाद ये आइडिया फेल हो गया था। In 1885, the Indian National Congress was formed by a number of educated and usually wealthy Indians. इनिशियली इस पार्टी को यूरोपियंस और मुस्लिम्स दोनों ने ज्वाइन किया था, बट लेटर it became a Hindus dominated party. Indian Councils Act 1892. This was an important act and its important features are listed below. Number 1. Indians were elected to the Viceroy's legislative councils instead of being nominated. Number 2. Separate electoral rolls. This meant that Hindu voters would vote for Hindu candidates and Muslims for Muslims. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1861 के एक्ट में इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल्स मेंबर बनाया गया था, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इंडियंस को ऑफिशियली इलेक्ट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इस एक्ट में एक पॉइंट ये भी पास किया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स होंगे, यानी जो हिंदू वोटर्स हैं वो हिंदू कैंडिडेट्स को वोट देंगे और मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट देंगे। नाउ लॉर्ड कर्जन emphasized the steps taken by him in the social field. He set up to try primary school and universities. He appreciated and worked for the preservation of Indian culture and promote archaeology. Students, Lord Curzon was a clear-sighted man and he tried to do what he thought was a good for the people of India. लॉर्ड कर्जन ने प्राइमरी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी इंडिया में, और उन्होंने इंडियन कल्चर और आर्कियोलॉजी को प्रोमोट किया था। आर्कियोलॉजी मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनालिसिस किया जाता है उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। Second point is the division of Bengal in 1905 into it, and West Bengal was Curzon's decision. Eastern Bengal was mainly Muslim and poorer, while Western Bengal was largely Hindu and prosperous. The Hindus opposed this. लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया था। जो ईस्टर्न बंगाल था वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और जो वेस्टर्न बंगाल था वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, लेकिन हिंदूज इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे। एंड ड्यू टू द डिवीज़न ऑफ बंगाल, a violence broke out in subcontinent and हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होना शुरू हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स का मर्डर होना शुरू हो गया एंड दिस वाज द टाइम व्हेन Muslims decided to set up their own party, that is Muslim League, which was formed in 1906. Now students, last of all, we will discuss Morley-Minto reform 1909. Morley-Minto reforms. Lord Minto was the Viceroy and Morley the Secretary of State for India in London. These reforms were the second step towards eventual independence. Number 1. Regional government and provincial assemblies. Number 2. Separate representatives for minorities, for example, Muslims and Sikh. Number 3. Indians to be appointed in the Viceroy Executive Council
which was welcomed by the Indians. The partition of Bengal was reversed in 1911, which benefited the Hindus. Muslims now began realizing the advantage of higher education. स्टूडेंट्स, लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे इंडिया की स्टेट के लंदन में, ठीक है। और मॉर्ले जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये रिफॉर्म भी हमारा सेकंड स्टेप था इंडिपेंडेंस की तरफ। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में कुछ क्लॉजेस पास किए गए थे, जैसे कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ में रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया था कि माइनॉरिटीज़ यानी जो मुस्लिम्स और सिख हैं उनके सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज़ में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का थर्ड क्लॉज ये था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को भी अपॉइंट किया जाएगा। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में किया गया था उसको वापस एक प्रोविंस बना दिया गया था। एंड देन मुस्लिम्स started to realizing the advantage of higher education.